Fine. Tarif is here. Assalamu alaikum, Tarif. How are you? I'm good. Alhamdulillah. क्या हुआ इतना late? How you are late, Tarif? Sir, I had some Wi-Fi issues now. Okay. So you completed that, na? Methods of preparation. You have Yes, sent me, right? हाँ, आपने भेजा था. ठीक है. उसमें एक चीज प्लीज करेक्शन देख लीजिएगा आप. एक करेक्शन ये है that you have written at the end Sandmeyer reaction, right? देखिए जरा sheet अपनी. yes, sir. In Sandmeyer reaction, please see that the Ki1 is not a Sandmeyer reaction. Okay. 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 Ki1 is But in not. the textbook is written that when I asked my teacher, she said that if that is given, like we can do it directly. Yeah, that is fine. You can do directly. That is correct. But that is not a Sandmeyer reaction. Okay. Okay, sir. Sandmeyer reaction means you should have copper Cu2X2. And if you just do potassium iodide, so it is going to give you, I'm not saying it is not going to give you iodobenzene. It is going to give you iodobenzene, but that reaction will not be called as Sandmeyer reaction. Okay. So in Sandmeyer reaction, you will show only cuprous bromide or chloride. Today we are going to do physical properties. So please write. Physical properties. Now please write in this. First of all, we will learn about boiling point. Boiling point. Okay. Now please write with me. Then I will explain it. All haloalkenes have higher boiling point than their parent hydrocarbon. Due to greater polarity and larger molecular mass. Now please see, in haloalkenes we have alkyl group and then we have the halogen group here. Since halogen group is more electronegative, it is going to pull electrons from the carbon chain and get a delta negative charge. Because of that, the carbon atom is going to get a delta positive charge. Now this type of polarity, so we'll have a dipole moment like this. There will be other haloalkane which will be having dipole moment like this, then other haloalkane dipole moment like this. So here we have delta negative, here will be having positive. Here delta negative, here will be having positive. Okay. So positive and negative sides of the haloalkenes are going to attract each other. They're going to attract each other, and that is why there will be a larger intermolecular forces of attraction. Okay. We will have intermolecular forces of attraction, but no such interaction will be present if you have alkyl halide. Alkyl means this is CH3 alkyl group and then hydrogen. So CH4 ho gaya, alkane. So if you have alkyl halide, there is polarity, but in alkanes, pure alkanes, we don't have any polarity. That is why there is no forces of attraction between the alkene molecules, and that is why the boiling point of haloalkane is greater than that of alkanes. Okay, polarity की वजह से. I hope you understand this, right? This is a molecule. It is having a positive side and it is having a negative side. There will be another molecule like this of haloalkane. Positive side here, negative side here, right? So this positive and negative are going to attract each other, and that is why they are going to keep the haloalkane molecules closer together, और boiling point उनका high हो जाएगा किससे? Normal alkane से. तारीफ, शाहिद, got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम शावेज, क्या हुआ, लेट हो गए आप? Yes, sir. क्या हो गया? Sleeping. चलिए, स्लीपिंग में फिर आदमी क्या ही कह सकता है ना. सो के उठे तुरंत आ गया ना, लेकिन शावेज
देर तो नहीं की? Yes, sir. I can. हाँ ठीक है, लेकिन लगातार ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ Yes. ठीक है, सोने को तो मतलब नमाज भी माफ है ना, सो जाइए अगर तो फिर क्या होगा, जैसे उठे वैसे ही नमाज पढ़ लिया आपने, है ना। लेकिन ऐसा लगातार नहीं करना है, ठीक है। चलिए प्लीज राइट हियर, फॉर अ गिवन हाइड्रोजन एटम, for a given halogen atom, boiling point is directly proportional to number of carbon atoms. What does it mean? If you are going to have larger number of carbon atoms, so dipole भी बड़ा होगा और molar mass भी बढ़ जाएगा. That is why we are going to have higher boiling point. So if I have CH3X, any halogen atom, but please remember halogen atom same रहना चाहिए, ठीक है। halogen atom को अलग नहीं करेंगे. halogen atom CH3X, this will have lower boiling point than CH3. CH2X, this will have lower boiling point than CH3, CH2, CH2X, ठीक है। If you have the same halogen atom, then you will compare the number of carbon atom. But if you have the same number of carbon atom and different halogen atom, तब क्या देखेंगे? Please see, for a given alkyl group, boiling point, it is directly proportional to molar mass of halogen, ठीक है। For example, if I have alkyl group R attached with fluorine, alkyl group R attached with chlorine, alkyl group R attached with bromine, and then alkyl group R attached with iodine. Now, since iodine is going to have higher molar mass, the boiling point will be higher of iodine. I mean alkyl iodine. Specifically, you want an example? Then I'm going to take ethane. Chloroethane will have the lowest, followed by chloroethane, followed by bromoethane, and then followed by iodoethane. Right, next. I hope you guys are done. Please write. Boiling point. It is inversely proportional to branching. It is inversely proportional to branching. What is the meaning? Please see. एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम समझा देंगे आपको. I have, let us suppose, 4 carbon atoms and then a bromine group attached. 4 carbon atoms and then we have a bromine group attached. Now, if I have this and then we have a bromine attached in the second carbon atom, I hope you can see that branching is increasing. I can still have 4 carbon atoms, 1, 2, 3, 4 carbon atoms, and the Br is group on the middle carbon atom. If I look at the formula and a molecular formula for all of these are going to have C4H9Br. You can count this. CH3, how many? You have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. Here we have 3 carbons. Sorry, here we have 1 carbon, 3 hydrogens, 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 hydrogen, है ना? 3 2 5 और 2 2 4, 4 और 5 9. So we will be having C4H9. Similarly, you can see here we have 4 carbon atoms. If I want to talk about the hydrogen, 1 2 3 4 carbon atoms. Hydrogen, here 3, here also 3, here we have 2, here we have 1. 3 plus 3 6 7 8 9. Here also H9 Br. Here how many carbon atoms? 1 carbon atom, 2 carbon atom, 3 carbon atom, 4 carbon atom. C4. All of the atoms are having 3 3 and 3 hydrogens, H9 Br. Now that means all of these are what? Isomers. All of these are what? Isomers. And when we have isomeric haloalkenes, उसमें अगर branching बढ़ती है ना, as you can see ना, if I am going from right to left, जिस तरह से structure draw किया हमने, branching is increasing.
Now what is going to happen to the dipole moment? Please see. Here we will be having delta negative. और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है ना, स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज ब्रोमीन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल द कार्बन एटम. इसे थोड़ा सा खींचेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, डेल्टा पॉजिटिव ये हो गया तो ये इससे खींचेगा, फिर ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, एंड सो ऑन. ठीक है. सो डाइपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. If I want to plot the dipole moment as a line, as a vector, then I will show the dipole moment like this, straight line. This is your haloalkane. Dipole moment is like this. If I want to see the dipole moment here, now this is a bit more spherical. ये कुछ इस तरह का है, right? And you have dipole moment here, delta negative. तो इस तरह का dipole moment यहाँ पे. Small dipole moment, I hope you can see. This is completely spherical. और इसमें dipole moment कैसा है? कुछ इस तरह का है. So as you can see, if I am having, see here, if I am having a straight chain, then the dipole moment is what? Q into D, na? Positive and negative charge separated by distance D. और जो dipole moment की value होती है, that is Q times D. So it is also dependent on the distance between the positive and negative charge. If I am having a straight chain, then the positive charge and the negative charge are far apart from each other, making the distance higher. And if the distance is higher, the dipole moment will be higher. If the dipole moment is higher, the forces of attraction will be higher. Got this? Tarif, Shahid and Chavez? समझ में आया ब्रांचिंग? Yes, sir. ठीक है, लेकिन कंक्लूजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ब्रांचिंग क्यों होता है ये कोई पूछने नहीं जा रहा, बट स्टिल आई डोंट वांट टू टीच समथिंग कि बस इसको याद कर लीजिए आप, है ना. डाइपोल मोमेंट्स इसका रिलेशन है, आप इसको बता भी सकते हैं. चलिए, डन एवरीवन, राइट अ क्वेश्चन. गॉड, एम इज सो लेट. राइट अ क्वेश्चन. अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स in order of their increasing boiling point. Assalamu alaikum, madam. How are you? वालेकुम अस्सलाम सर. क्या हुआ बहुत लेट? सर मैं अभी स्कूल से हूँ. आप अभी स्कूल से आ रहे हैं? क्या हो रहा है आपके स्कूल में? नहीं सर, वो ना आज हमारा मैथ्स का एग्जाम था और मैं बहुत लेट पहुंची, तो मुझे वो लोग पेपर लिखने में दे रहे थे. पेपर लिखने नहीं थे? आप लेट क्यों पहुंचे स्कूल? मैं लेट उठी, ओह माय गॉड. तो लाइक अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले लिख के आई हूँ. आपने आप ये कैसे हो गया? कोई उठाया नहीं आपको घर में? सर एक्चुअली मॉम नहीं है ना घर पे मेरे. अच्छा, मॉम नहीं है. अच्छा, दैट मेक्स सेंस नाउ. ठीक है, ओके. एक बार आई वाज इन 3rd या 4th स्टैंडर्ड. ठीक है, आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन स्टडीज, लेकिन दैट वाज ऑल क्रेडिट्स टू माय मदर. वो बैठाती थी, पढ़ाती थी, है ना. मगरिब के बाद बैठो पढ़ो, है ना. मगरिब से ज्यादा तक पढ़ना ही पढ़ना, डेली पढ़ना. और एक बार ऐसा हुआ कि मम्मी नानी घर में थी, और नानी घर में थी, गर्मी की छुट्टी के बाद वो लेट आई, है ना. स्कूल खुल गया था लेकिन नहीं आई थी उस टाइम. और उस टाइम जब हाफ ईयरली हुआ तो हम फेल ही हो गए. ठीक है, तो दैट मेक सेंस कि अगर माँ चली जाती है अगर घर से तो पूरा ही तहस नहस हो जाता, सब कुछ इधर उधर हो जाता. खैर, सी अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स. अच्छा, इंडिया आई है क्या आपकी अम्मी? नहीं सर, यहीं पर है, लेकिन मेरी खाला के घर पर. अच्छा, हालांकि सब कोई है आपके यहाँ कतर में? पूरा इंडिया लेके चले गए आप अपने? फिर यहाँ देखिए, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन. तो आपके पापा को डांट पड़ी? जी सर. हाँ. पड़ी.
एक दिन छोड़ के क्या जाओ, कुछ नहीं संभाल पाते हैं। चलिए लिखते हैं। हर इंडियन घर की यही कहानी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रोमोमीथेन ब्रोमोफॉर्म। अच्छा हाँ, ये शायद आपको ब्रोमोफॉर्म नहीं समझ में आया। ब्रोमोफॉर्म इज गोइंग टू बी एनीथिंग। हैलोफॉर्म का हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। हैलोफॉर्म, हैलो मीन्स कोई भी हाइड्रोजन आ जाए, देन इट इज गोइंग टू बी CH(X3). यहाँ पे ब्रोमो है, X की जगह Br3 हो जाएगा बस, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में CHCl3, आयोडोफॉर्म CHI3, फ्लोरोफॉर्म CHF3। ओके, सो दिस इज हैलोफॉर्म। यहाँ नहीं लिखते हैं, तो नीचे कहीं लिखते हैं, दिस इज हैलोफॉर्म। ओके, डाइब्रोमोमीथेन भी है। I will give you 1 more minute to draw the structures. Please see guys, bromomethane, you will be having CH3Br. Bromoform CHBr3. Chloromethane CH3Cl. Dibromomethane CH2Cl, sorry, CH2Br. Now, as you can see here, the alkyl group is same. All of these are what? One carbon atoms. Methane, methane, methane है सारे, है ना? One carbon atoms. So when you have one carbon atom, या फिर when the alkyl group is same, then boiling point is directly proportional to molar mass of halogen. Please see here guys, molar mass of X मतलब क्या? Halogen, ठीक है? For a given alkyl group, यानी कि number of carbon atom जब same होते हैं तो क्या देखेंगे? Molar mass of halogen atom. Now tell me which is having the highest molar mass A, B, C, D में? बोलिए भाई, क्या हो गया? शांति क्यों इतनी? इरम, तारीफ, शाहिद, किसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा? विच कंपाउंड विल बी हैविंग हाई? देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जहां पे है वहीं पे ज्यादा मोलर मास होगा ना। ऐसी शांति बना रखे, Br3 है, ठीक है, तो B विल बी हैविंग द हाईएस्ट मोलर मास। हाँ, वेरी गुड। आफ्टर दैट Br2, दैट इज D। आफ्टर दैट Br, दैट इज A। एंड देन क्लोरीन, दैट इज C। अगर आप लोग को नहीं पता हाइड्रोजन्स, फिर कल बाहर आई आंटी। Chlorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Chlorine is having the lowest molar mass, then chlorine, then bromine, then iodine, then astatine. Astatine हर organic chemistry में नहीं पढ़ना रहता, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। Bromine is going to have the higher molar mass between fluorine and chlorine. चलिए, right, next B question. 1 chloropropane, comma isopropyl chloride,
and you have 1 chlorobutane. First is 1 chloropropane, 3 carbon atoms and a Cl. Isopropyl chloride, 3 carbon atoms and chlorine in the second carbon. 1 chlorobutane, 1, 2, 3, 4 carbon atoms, and then attached chlorine in the first carbon. Now, first of all, you will see here that in A and B, we have the same number of carbon atoms, but C is having higher number of carbon atoms. That is why the boiling point will be highest for C. Then in A and B, you can see that the number of carbon atoms are same, but B has more branching. That is why A will be having higher boiling point followed by B. So C कैसे मिला? Directly proportional to number of carbon atoms. And A और B में क्या देखेंगे? Boiling point, it is inversely proportional to branching. The points are already written in your notebook. And everyone, yes or no, please tell me. All of you done? Iram, Tarif, Shahid, Shavez. Yes. So right next, melting point. Now, in this you will write melting point of a substance depends on 2 major factors. Number 1, it is the intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction. Second is packing. Second is packing. ठीक है, intermolecular forces of attraction आप लोगों को पता होना चाहिए that we have hydrogen bonding, right? Then we have van der Waals forces, dipole interactions. Then we have induced dipole, instantaneous dipole. These type of attractions are there. ठीक, packing समझ लीजिए. Packing is more important in melting point. In melting point we have a substance in solid. उसको heat करने पे फिर वो melt करेगा. So solid में you will be having the atoms very closer together, the molecules, the particles very closer together. So for example, if you have something like this, the molecule structure is like this. ये काफी अच्छे से पैक हो जाएगा, correct? The packing will be very effective. काफी close कर सकते हैं इनको तो आप, है ना? It can be brought very closer. Similarly, if you have something like this, please don't draw these things. I'm just explaining, okay? This is also a very good packing, है ना? Symmetrical अगर आपको structure मिल जाए, then you will be having a good packing. But if I compare these packing with, let us suppose a structure is something like this, इस तरह से, ठीक है? तो दूसरा वाला ऐसे, तीसरा वाला ऐसे, है ना? So this is not symmetrical. That is why you can see that the packing is not very good. There are gaps, multiple gaps यहाँ पे. उतना gap यहाँ पे आपके पास नहीं है. Here we have very minimum gaps. So you can say that when a structure is symmetrical, the packing is good. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है? तो packing अच्छा रहने की वजह से क्या होगा? If the packing is good, then it is not going to break apart easily. और फिर हम क्या बोलेंगे? Melting point will be higher. Melting point क्या हो जाएगा? वैसे substances का higher हो जाएगा. ठीक है? So you can write symmetrical structure
leads to better packing, and higher melting point. ठीक है, एक क्वेश्चन जो आता है यहां से, दैट इज प्लीज राइट, why is melting point of p dichlorobenzene higher than its O and M isomers, its ortho and meta isomers? क्या मतलब है इस सवाल का, पहले ये देखिए. Why is the melting point of p dichlorobenzene? What is the p dichlorobenzene? अरे भाई ठीक है, ओके, लिख लिखिए आराम से लिखिए. बेंजीन रिंग, बेंजीन में गोल बना देते हैं, ठीक है ना. फिनिश्ड, ठीक है. बेंजीन रिंग, कुछ मत बनाइएगा अभी आप लोग प्लीज, ठीक है. p dichlorobenzene means the chlorine atom is on para position here and here, this is para position. O isomer means in ortho position, chlorine here and chlorine here, and M isomer means chlorine here and in the meta position here. Okay, so this is P dichlorobenzene, this is O dichlorobenzene, this is M dichlorobenzene. Tell me which is more symmetrical, O, M or P? P ज़्यादा है, O ज़्यादा है या M? Which is more symmetrical? P. P is more symmetrical. That is right. ये आंसर लिखिएगा, please write. Due to symmetrical structure of P dichlorobenzene, due to symmetrical structure of, ये लेकिन melting point में ही होता है, ठीक है. Symmetrical structure of, due to symmetrical structure of P dichlorobenzene, P dichlorobenzene, it fits in the packing, efficiently. And hence has higher melting point than its O and M isomers. इसको जरा लिखिए आप लोग, I just want to see. I think अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के एग्जाम में ना, I don't know about your school, but अगर आप बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ लिख देंगे ना, because of symmetrical structure, I think that is also enough. But let me just confirm that. Secondary scholar. Yes, sure. ठीक है. Yes, sir.
Let me know once you're done writing, okay? Done. This was the answer that was given by the CBSE marking scheme. Symmetrical structure can easily fit into the lattice. So due to higher packing efficiency, है ना, higher melting point होता है, efficient packing है ना, same is packing efficiency fits in the packing efficiently, hence has higher melting point than its ONMI equivalents. ठीक है, तो symmetrical structure जो word है ना, वो आपको जरूर से जरूर लिखना है. Marking scheme जानते हैं क्या होता है? Do you guys know what is a marking scheme? इरम, तारीफ, शाहिद, शावेज, क्या होता है? मार्किंग स्कीम क्या होती है? Answers. हाँ, आंसर्स होता है ना. सो जब सीबीएसई पेपर चेक करने के लिए देता है ना, सो इट आल्सो गिव्स द आंसर. ये आंसर रहे तो मार्क्स दे दीजिएगा, ये आंसर रहे तो मार्क्स नहीं दीजिएगा, ऐसे करके. ठीक है, तो उसमें ये था सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सो इट कैन फिट इजीली इनटू द लैटिस. चलिए, इसको हम रहने देते हैं ना. आई विल राइट दिस आंसर ओनली फ्रॉम नाउ ऑन. सिमिलर मीनिंग ही है ना, लेकिन सेम टू सेम अगर आंसर लिख दें तो फिर क्या ही बात नहीं, एकदम घबरा जाएगा. जब आपका पेपर चेक कर रहा होगा क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा. कहीं इसको पहले से तो नहीं मिल गया था क्वेश्चन पेपर, है ना? नहीं, घबरा नहीं जाएगा, उसको लगेगा कि क्या बात है भाई, सही सही बिल्कुल लिखा है, एकदम एग्जैक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. और एक नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट. कैसे लिख रहे हैं हम? हेडिंग रेड पेन से, ठीक है. डाइपोल मोमेंट. What is dipole moment? Dipole moment is given by mu. All of you have learnt about dipole moment in physics, right? अरे हाँ या ना, जल्दी बताएं. Yes, sir. पढ़ा है ना आप लोगों ने? पढ़ा है ना? Yes, sir. So mu is equal to q times d. Q is the charge and d is the distance between the charges. So here you have a point charge. Here you have a point charge. This is plus q. This is minus q, and this is the distance between them. So you can take one of the charges. उसका सिर्फ magnitude लेना रहता है, right? Now, if I talk about the distance here, if I talk about the distance, then you should know that single bond has the longest. Single bond is the longest bond, correct? Then single bond क्या है? Longest है. Then you have the double bond, which is a bit short. Triple bond में you are having a bit more shorter bond. ये बातें आपको पता है नहीं पता है? सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, पता है सबको? इरम, Yes. शावेद, हाँ ठीक है. Chemical bond. जी, सॉरी, No, कुछ sir. It बोल रहे was हैं? there in chemical bonding. इट वाज, क्या बोला शावेद आपने? No, sir. Like it was this thing was there in chemical bonding. हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में था. पता है ना आपको कि नहीं पता है? Yes, sir. पता है ना? हाँ, बस ये पता है काफी. ओके, प्लीज राइट हियर. Just give me a second, guys. I'm getting a call from Learnivio. Hello. क्या हो गया?
Yeah, sorry guys, please see mu is equal to q into d. Okay, please see here, right? Dipole moment of haloalkenes is greater than that of haloarenes. Is right, because the CX bond in haloarene has partial double bond character due to resonance. Due to resonance. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Got this? Yes or no? Please tell me. आया नहीं आया समझ में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए. Yes, sir. आया पक्का? सबको समझ में आ गया क्या लिखा है? अगर किसी को नहीं आया हो तो प्लीज शर्मा रहे हो कोई अगर पूछने से देख. इन haloalkene we don't have any resonance है ना. haloalkene में क्या होगा? You have only R and that is bonded to X. In haloarene rather you will be having a benzene ring like this, double bond, single bond, double bond, and here you will be having halogen atom. This halogen atom has lone pair electrons that undergoes resonance like this. So you will get a negative charge here. This bond will be double bond X. Okay, this bond will be double bond X, and what is going to happen? You will be having bond here, a bond here, and this will be having delta positive charge. Okay, this will be having positive charge. After the delta positive, will be having a positive charge. Okay, because it you will make other resonating structure or एक resonance hybrid जो मिलेगा, that will be something like this. All these bond will be partial double bond. This bond also will be partial double bond, the halogen atom. And as you have seen, double bond is shorter. As double bond is shorter, then what is going to happen? The distance between this delta positive, sorry, this delta negative and this delta positive is going to be smaller. Here we are having delta positive and delta negative. This distance is going to be larger, or delta positive or delta negative के बीच में जो distance होगा, that is going to be lower. That is why what is going to be their partial double bond character की वजह से क्या होता है? It is having lower dipole moment. एक और reason है. Due to resonance. We will write next. Further, the CX carbon of haloarene is sp2, which is more electronegative than sp3, which is more electronegative than sp3, and therefore the polarity of, यानी जो charges होते हैं, Q जो होता है, polarity of CX bond in haloarene is lower. अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं haloarene की, उसमें जो म्यू है that is equal to Q times D, डिस्टेंस भी कम है, चार्ज भी कम है, तो डाइपोल मोमेंट तो कम होगा ही होगा. यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. चार्ज भी कम है और क्या कम है? चार्ज भी कम है और क्या कम है? Distance between the charges. So dipole moment is obviously going to be lower.
Done everyone? Yes or no? Please tell me. सबने लिख लिया? No, sir, I'm ready. You will see exercise में एक सवाल है NCERT exercise में, that is 10.12, ठीक है? उसमें यही सब 10.12 में फर्स्ट पार्ट होगा. प्लीज सी दैट. उसमें क्या होगा? डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है. You have chlorobenzene versus cyclohexyl chloride. Okay, as you can see यहाँ पे dipole moment किसका ज्यादा होगा? Haloalkene. What is haloalkene here? The cyclohexyl chloride is what? It is a haloalkene. That is why it is going to be having a higher dipole moment. Reason is the same. ये haloalkene है और ये haloarene है ना? So you write the same reasons. No difference. Exercise 10.2 में फर्स्ट सवाल. Now please see here. Next exercise you have 10.4 question. Question number 10.4. It is asking to compare which one of the following has highest dipole moment. Which one of the following has highest dipole moment? फर्स्ट में उन्होंने दिया हुआ है CH2Cl2. स्ट्रक्चर ऑफ CH2Cl2 कैसा होगा? प्लीज सी. कार्बन एटम, इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है ना? CH2Cl2 इस तरह से होगा जिसमें यू विल बी हैविंग 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 क्लोरीन्स. ठीक है. सिमिलरली इसी तरह से आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ किसका? सेकेंड इज CHCl3 एंड थर्ड इज CCl4. Done everyone? Yes or no? Please tell me. सबने कर लिया? ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर. Then I will explain which one is having the highest dipole moment. Sir, I was having a doubt. Sorry, what Chavez? I was having a doubt, sir. डाउट है? Yes, yes. जी बताइए क्या डाउट है? जोर से बोलिए, लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है. Sir, here it is written that in haloalkenes it is not having any double bond, so it will have more dipole moment. But in haloarenes there is charge, right? Like magnitude of charge is more, right? In haloarenes. Magnitude of charge is more. Wait. Magnitude of charge is more. Yes, in haloarene. Why? Like it's more electronegative. हाँ ठीक है, सुनिए. See here, I have A and I have B. ठीक है. और दूसरे केस में आपके पास है A and C. A का तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सेम होगा, तो A को हम मान लेते हैं 1 और इसको भी मान लेते हैं 1. ठीक है. B और C का A से कम है. ठीक है. B का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट अस सपोज 0.5 और C का उससे ज्यादा है 0.8. ठीक है. तो बताइए AB वाला केस हैलोअल्केन का होगा, राइट? Yes, AB sir. वाला केस जो होगा हैलोअल्केन का होगा.
हियर ए इज योर हैलोजन एटम, ठीक है ना। ए को क्या मान लीजिए आप, हैलोजन एटम। बी को मान लीजिए sp3 कार्बन, sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, ठीक है। अरे हाँ यार शाबिज, Yes, sir. ठीक है। अब बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 0.5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 0.2 का। तो वेयर इज द डिफरेंस ग्रेटर? 0.5. बात समझ में आई? Yes. समझ में आई बात? Yes, sir. हाइड्रोजन एटम तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके साथ आप दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर लगा देंगे तो फिर डिफरेंस तो बचेगा ही नहीं, है ना। Yes. गॉट इट? Yes, sir. ठीक, चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। Now those who have drawn the structure, I will be taking, please see, these two lines are on the plane, ठीक है। इनको हम हमेशा साथ में लेंगे, इनसे एक डाइपोल आएगा, दैट विल, उसका फिर रिजल्टेंट लेंगे हम लोग, ठीक है। उसका क्या लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे। प्लीज सी, इन द केस ऑफ CCl4 वी आर हैविंग डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर एंड एवरीथिंग, राइट? यस और नो, प्लीज टेल मी। हाँ या ना, जल्दी बताएं। रिजल्टेंट वेक्टर पता है आप लोग को? ठीक है, वेरी गुड। नाउ सी हियर, the dipole moment in the CCl4, it will be from carbon to chlorine like this. कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह से होगा। CCl में इधर से होगा ऐसे, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी ऑन द प्लेन, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देयर रिजल्टेंट विल बी ऑन द प्लेन इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. सही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No. Now then we have inside the plane a chlorine atom inside the plane और एक outside the plane, एक inside the plane है और एक outside the plane है, and their dipole moment, क्योंकि एक inside है और एक outside है तो dipole moment कहाँ पे होगा उसका रिजल्टेंट? on the plane, बीच में, बिल्कुल है कि नहीं। 3D में अगर देखें तो एक inside the plane एक outside the plane है अगर कोई चीज, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच, on the plane। yes or no? हाँ या ना, कोई दिक्कत? अरे बोलिए भाई। No, sir. No problem. Can you see both of the dipole moments are cancelling each other? Yes, sir. Yes. So mu net will be equal to 0. 0, ठीक है। इस केस में देख लेते हैं हम, प्लीज सी हियर। इन दिस केस व्हाट विल बी हैपनिंग, दिस हाइड्रोजन एटम इज गोइंग टू बी डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पे डाइपोल इस तरह से होगा, बिकॉज कार्बन एटम इज डेल्टा, वो कार्बन खींचेगा क्लोरीन वगैरह की वजह से, कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और यहाँ पे जो आपके पास होगा डाइपोल मोमेंट इस क्लोरीन की वजह से, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। बट ऑब्वियसली क्लोरीन इज गोइंग टू पुल मोर इलेक्ट्रॉन देन कार्बन, व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल आपके पास आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जो रिजल्टेंट डाइपोल आएगा आपके पास, दैट विल बी समवेयर लाइक दिस, मतलब कुछ इस तरह से रहेगा, सही है? रिजल्टेंट जो होगा, है ना, Yes. है ना, ऐसे ऐसे है तो इसी तरह से होगा ना। इधर है आपके पास और इधर है आपके पास। रिजल्टेंट अगर यहां से निकालना है आपको, इस कार्बन से देखना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो थोड़ा लोअर ही रहेगा, लेकिन ऐसे रहेगा थोड़ा सा, राइट? थोड़ा कैंसिल होगा और थोड़ा बचा हुआ रहेगा इस तरफ से। हाँ या ना बताएं भाई। सही है शाबिज? अच्छा, फिजिक्स में अगर किसी को दिक्कत हो रही तो बताइए, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा तो बताइए, है ना। हमें तो फिजिक्स पढ़े हुए 10 साल हो गया, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट की निहायत से हम कुछ फिजिक्स जानते हैं बस। नाउ दिस वन विल बी स्टिल द सेम ऑन द प्लेन, डाइपोल मोमेंट लाइक दिस, करेक्ट है। इनको हम हटा देते हैं बिकॉज रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, ठीक है। कैन यू सी that this is going in the left direction, this is going towards the rightward direction, so there will be some cancellation of dipole, सही है? आया ना, बताएं भाई। Some Yes. cancellation of dipole will be there. Now let us look at the case of the CH2Cl2,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्टेंट रहेगा, दिस विल बी दिस वन, नो कैंसिलेशन. Therefore, this will be having the highest dipole. CH2 Cl2 will be having the highest dipole. Clear है? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ड्रॉ करके आराम से बिल्कुल लिख लीजिए. Let me know once you're done. Please let me know once you're done. लिख रहे हैं अभी भी? Yes, sir. All right. Done. Yes, sir. Now, right, next, solubility. You're right here. Haloalkenes are very slightly soluble in water. Haloalkenes are very slightly soluble in water, meaning they are immiscible. Okay, meaning they are immiscible. Now please see what should be present है ना कि कब कोई चीज soluble होगा water में. Please see here. If I have water molecules, then water is having a structure like this, H, that is bonded to oxygen, and then again H. Okay. Then again you will have some other water molecules like this. Oxygen atom, hydrogen atom here, hydrogen atom here. Then there will be some again oxygen atom. Then you will have hydrogen here and hydrogen here, like this. We'll have some oxygen atom here with hydrogen here and hydrogen here. Now please see, oxygen is going to have a delta positive charge or delta negative charge. Hydrogen will have a delta positive charge because of electronegativity difference. The oxygen atom is more electronegative. That's why it is going to pull the electrons from hydrogen atom. And it will gain a negative charge. और यहाँ पे एक bonding होता है, इसको बोलते हैं hydrogen bonding. Okay.
between the delta positive charge of hydrogen and the lone pair electrons in the oxygen atom that are more they have more contribution towards the hydrogen bonding, है ना? वो delta negative charge से उतना नहीं होता जितना lone pair electron क्योंकि होता है oxygen के ऊपर, उसकी वजह से होता है, ठीक? Now, in order to get dissolved, please listen very carefully. In order to get dissolved, you have to break the intermolecular forces of attraction. That means hydrogen bonding, intermolecular forces of attraction between the water molecules. और यहाँ पे haloalkene को घुसना पड़ेगा between the water molecules. If it is not between the water molecules, तब तक वो dissolve नहीं होगा. And in order to get inside the water molecules, or not inside rather, between the water molecules, it has to break the forces of attraction. Okay, it has to break the forces of attraction. And when it is going to break the forces of attraction, तब उसको energy लगेगी. Okay. Now there will be some new forces of attraction that come into play when when haloalkane is mixed inside water. इस तरह से. ठीक है. This is delta positive. This is delta positive. Hydrogen atom इस तरह से रहेगा. X यहाँ पे R रहेगा. X is also having lone pair electrons. So it is going to interact with the hydrogen atom like this. Okay. Now, यहाँ पे दो चीज हो रहा है. When you are going to mix the haloalkene, a new type of bond will be formed, a new type of interaction will come into play, and that interaction is a polar interaction. Break क्या कर रहे हैं हम लोग? We are breaking. In order to get dissolved, we have to break the interaction between water molecules, which is hydrogen bonding. And what we are forming? We are forming a new type of interaction that is dipole-dipole. And this dipole-dipole interaction is not enough to break hydrogen bonding. That is why what happens, these are immiscible in water. So please write. इस तरह से लिख लीजिएगा आप. Here it is forming. जोर से तेज बोलिए. Sir, it's soluble, right? So because it's forming bond, right? नहीं सुनाई दिया हमको. रुक जाइए जरा. Let me get my earphone charges. चावेज बताइए. Yes, sir. Here it's soluble, right? Because it's forming bond. Hydrogen bond is there. नहीं. सुनिए. वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है. वाटर का कैसा बॉन्ड है बताइए. Hydrogen bond. और हाइड्रोजन और वाटर का कैसा बॉन्ड है? दैट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, वो पोलर बॉन्ड. ठीक है. Yes. ठीक है. दैट इज पोलर. रेड वाला पोलर है. तो हमको ब्रेक क्या करना पड़ रहा है? आई हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल टू गेट इनसाइड. Sorry, not get inside, my bad wording. Get between them. And as soon as the haloalkane gets between them, it forms dipole-dipole interaction or polar bond. ठीक है. A polar bond is weak bond. Hydrogen bonding is strong bond. तो strong bond तोड़ के weak bond कौन बनाना चाहेगा? ठीक है. That is why what happens? It is immiscible. Please write here. Write it like this. ऐसे लिख लीजिए. When Rx is dissolved in water, new interactions come into play. New interactions come into play between water and haloalkane. Between water and haloalkane. First topic लिखिएगा. This new force of attraction between water and Rx
is much weaker than hydrogen bonding. Is much weaker than hydrogen bonding. Much weaker than hydrogen bonding of water कर लीजिए, ठीक है, of water. Hence, Rx is not soluble in water. सवाल आपके इससे आता है, haloalkenes are not miscible in water even though they are cool. तो आप यही लिख दीजिएगा सर, that will be enough. उसके बाद लिख दीजिएगा haloalkenes are soluble in organic solvents. मतलब आंसर में मत लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. वो आंसर जो है ना, दे आर पोलर बट स्टिल दे आर नॉट मिसिबल, उसका आंसर ये. तो ये बताइए, कुछ होमवर्क मिला था आपको? हाँ कहीं सुननी, डिड यू गेट सम होमवर्क? सबमिट कर दिया आपने? Sir, I will do today. Test was there. ओके, शाहिद आपने कर दिया था? शाहिद, Yes, sir. डिड यू सबमिट दी होमवर्क, दी असाइनमेंट? No, I didn't. आपने I'll do नहीं किया है. कब करेंगे? कब करेंगे? किसी ने नहीं today. किया ना आप लोग? टुडे कर, आज कर लेंगे. किसी ने नहीं किया ना? Yes. किसी ने नहीं किया. कर लीजिए, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, दैट इज रिलेटेड टू द, कुछ ज्यादा नहीं दिया था लेकिन जहां तक हमको याद आ रहा है. वेट अ सेकंड, कितना दिया था आप लोगों को? अच्छा, कल टेस्ट है, आप लोगों को पता है? हाँ गाइस, कल टेस्ट है, आप लोगों को पता है, नहीं पता है? Sir, I have to check. नहीं पता है आप लोगों को, लगता है. अच्छा, ज्यादा तो नहीं दिया था कल हमने, 2 सवाल दिए हैं बस, 3 सवाल दिए हैं. कर लेना चाहिए था आप लोगों को. Sir, I didn't attend the class. आपने अटेंड ही नहीं किया था क्लास? Yes, sir, my biology test was there. ये तो ये, हाँ ठीक ठीक, याद आया. क्या मतलब, ये तो खैर क्या ही बोले हम, थोड़ी आप लोगों को नहीं समझा सकते हैं. टेस्ट की वजह से आप लोग 1.5 घंटे की छोटी सी क्लास मिस कर देते हैं. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, फिजिकल प्रॉपर्टीज. सर जी जी, हम बताएं. वो जो पोर्टल है ना, वो वर्क ही नहीं कर रहा. क्या नहीं कहा, क्या नहीं वर्क कर रहा है? सर पोर्टल में असाइनमेंट्स नहीं है मेरे. आप ऐप खोलिए जरा. Can you scroll up? हाँ, सॉरी सॉरी, आराम से लिखिए. आप ऐप खोलिए जरा, इरम. जी जी सर, एक मिनट. या आप जाइए, जैसे आपने ऐप खोला होगा, आ रहा होगा वेलकम इरम एट लर्निंग योर लर्निंग कंपेनियन, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस असाइनमेंट, आ रहा है? जी सर. उसमें टैप कीजिए. बायोलॉजी वाला या प्री सिलेक्टेड होगा, है ना? वहां पे जी. केमिस्ट्री का आ रहा है, केमिस्ट्री में क्लिक कीजिए. हाँ सर, केमिस्ट्री में बस सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स ही है. ये चैप्टर केमिकल, नहीं है. तो ये तो आपने ठीक बताया, केमिकल काइनेमेटिक्स लिख दिया इन लोगों ने. केमिकल काइनेमेटिक्स, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है. केमिकल काइनेटिक्स होगा ना ये. एक सेकंड, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजिए जरा, ठीक है? ओके. आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें भेजिए, करवा देते हैं.
स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। और किसी को दिक्कत हो रही है ऐप में या किसी और चीज में? सर बाकी का आ रहा है रम आपका, फिजिक्स का, मैथ्स का, बायो का, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके नहीं सर, नहीं सर, कोई उनका नहीं आया। उनका भी नहीं आ रहा। मैंने उन्हें मैसेज भी किया था पर उन्होंने इग्नोर कर उन्होंने क्या बोला? इग्नोर किया। क्या इग्नोर कर दिए? हम्म, ऐसा कुछ हो जाए तो हमको हमको बोला कीजिए, ठीक है ना, हम ठीक करवा देंगे। ओके, चलिए। और ये बताइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का आपने कंप्लीट कर लिया किरण? हाँ सर, और एक पेज बाकी है, वो केमिकल नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन को क्वेश्चन ये फॉरवर्ड करते हैं। होपफुली आज हो जाएगा, ठीक है। इरम, आपने अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला कर दिया तो मुझे एक बार फोटो भेज दीजिए, ठीक है। दोस्तों, आप डन 1 पेज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिन लोगों ने भी लिख लिया है प्लीज हमें मैसेज करते हैं, ठीक है। और शाहिद, यू वांटेड एन एक्स्ट्रा क्लास दैट वाज ऑन बायोमोलिक्यूल्स, और ये आपको चाहिए, ये कल लेंगे ना 10 o'clock, राइट? Yes, yes, sir. टुमारो प्लीज आ जाइएगा, ठीक है ना? आ जाएंगे ना शाहिद? Yes, sir. स्टार्ट क्लास। चलिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ओके, एंड वी विल मीट ऑन ट्यूसडे, है ना? विल मीट ऑन ट्यूसडे। अच्छा, एक चीज और बताइए, समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लास में आएंगे इरम, तारीफ, शाहिद एंड शाविज? सेकेंड रिपीट। जब समर वेकेशंस होंगे, आपके स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, तब हफ्ते में किसी किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ सकते हैं सुबह के टाइम? यस सर। आ सकते हैं इरम, आ सकती हैं आप? नो सर। क्यों? अरे भाई साहब, ओके, क्यों सर इरम? मेरा सर मेरा रेगुलर क्लास में भी श्योर नहीं है। क्यों? क्लास इंडिया जा रही है, इंडिया जा रही है? जी सर। अरे भाई मेरे, इंडिया जा रही है तो क्यों, कितने दिन के लिए जा रही है इंडिया? ये मत कीजिए प्लीज इरम, बाद में फिर आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। सर जो एक लोग भी 1 मंथ। यार लेकिन बहुत परेशानी हो जाएगी इरम, ठीक है। देखिए, इस बार तो मेरा प्लान ये है कि हम आप लोग को मना मना के बिल्कुल एकदम प्यार प्यार से एक्स्ट्रा क्लास के लिए मना ले, और गर्मी की छुट्टियों में अच्छा खासा आप लोगों से सिलेबस कवर करवा ले। देखिए, मेरा सिलेबस तो कवर हो जाएगा, आपका होना ज्यादा जरूरी है। फर्क आपको समझ में आता है दोनों में? आपको तो आता होगा है ना? कुछ चीजें होती है जो स्कूल में भी खत्म हो जाती है, कोचिंग में भी खत्म हो जाती है, लेकिन आपका खत्म हुआ नहीं रहता, मतलब बच्चों का खत्म हुआ नहीं रहता, राइट यार? यस। है ना? तो हम थोड़ा स्लो ले जाते हैं चीजों को, है ना? जितना हो सकता है हम क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों से सारा, इतना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी हैं आप क्लास में ही कर लेते हैं, कि आपको सेल्फ स्टडी उतना नहीं करना पड़ता। सेल्फ स्टडी मिनिमम इतना करना पड़ता है कि टेस्ट होता है लर्निंग में, तो आप वो टेस्ट अटेंड करें, ठीक है। और मतलब हम स्लो पढ़ाएंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना आपको, अगर हम सवाल देंगे बहुत सारा। देखिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि ये सवाल को हम बता दें यहाँ पे, 1 मार्क्स का ही सवाल आएगा ना ये। इस सवाल को क्या करें, हम बस बता दें CH2Cl2 में याद रख लीजिए, ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने आप लोगों से स्ट्रक्चर बनवाया, आप लोगों से जब स्ट्रक्चर बनवाया तब टाइम लगा, राइट? आप लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो धीरे धीरे बनाते हैं ना, जितना टाइम आप एग्जाम, हम ये खुद भी तो स्ट्रक्चर बना सकते थे ना, कोई हार्ड स्ट्रक्चर तो था नहीं। आपको हम स्ट्रक्चर बनाते तो कुछ आप लोग को नया चीज भी नहीं लगता, है ना? ये स्ट्रक्चर हम खुद ही बना लेते, लेकिन बिकॉज हियर वी हैव ब्रोमोमीथेन,
ब्रोमोफॉर्म है, नया स्ट्रक्चर है, डाई ब्रोमोमीथेन है, तो कंफ्यूज होने की चांसेस ज्यादा है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप सही आ जाए तो ज्यादा बेहतर, इस वजह से आपको टाइम दें। तो जनरली हम सवालों में आप लोग को टाइम देते हैं, इसी वजह से जनरली केमिस्ट्री का आपका थोड़ा सा पीछे ही चलेगा, लेकिन एक चीज क्लियर रहेगी कि आपको समझ समझ की चीजें आएंगी। वरना हमें क्या था, हम ये सवाल भी नहीं कराते, पॉइंट्स लगा के छोड़ देते। यहाँ पे तो एग्जाम्पल कराया है भैया, यहाँ पे तो एग्जाम्पल कराया हुआ है ना, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि आपको सेल्फ स्टडी में कम से कम टाइम देना पड़े। सेल्फ स्टडी आपसे क्या कीजिए, रिवाइज कर लिया नोट्स, सवाल आपको ज्यादा नहीं बनाने पड़े, सवाल आपके सारे नोटबुक में रहे।